chairman of the AIRC और बेस्ट चेयरमैन जिसने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी, बहुत आगे बढ़ाया, चीजों को आगे समझाया है। एंड टुडे इज द गोल्डन चर्चाज टॉपिक इज एमएसएमई। आज जो 52वां दिन है हमारा गोल्डन चर्चा का, इसमें हमने काफी लोगों को देखा है जिन्होंने पहली बार बोला है। बोलते समय काफी कुछ उन्होंने भी सीखा है, सिखाया है। तो मैं इस पे रिक्वेस्ट करता हूँ विवेक जी को आज का स्पेशल एड्रेस देने के लिए। Thank you, Chimpu ji, हम्म। and thank you, the chairman, sir, for this initiative. Uh, Good evening to all. It's a pleasure to welcome you all to today's Golden Charcha, organized by EIRC of ICAI. And thank you for joining us and your continued commitment for professional learning, thoughtful leadership. The topic for today, MSME, extremely close to our profession because MSME, the data that I was going through, it contributes to close to 30% of India's GDP and almost 45% of manufacturing output. So the numbers speak for itself. The data for the employment that it provides to Indians, it's almost 11 crore. So a good number in that count as well. And if we add up all those, almost 99% of business in India fall under this MSME category. So this clearly shows that MSME is not merely a very niche segment. They are the economy in itself. I'm reminded of a very famous quote by Peter Drucker. He says that the best way to predict the future is to create it. So MSMEs live by this quote every day in, day out. They have their challenges, rising costs, regulatory changes. There are digital disruptions that we see day in, day out with the AI thing coming in, and also the funding challenges. But we have seen MSMEs continue to adapt, they innovate, they grow, and form the backbone of our economy. One interesting data point that I saw was that MSME with proper financial statements, timely compliance, they become like they have a very high significant chance of getting access to formal credit, the government schemes, and this is where VCS can play a big role. So as of last year, almost 2.5 to 3 crores MSMEs they were registered under that Udyam portal, but there's a large chunk of it where eligible enterprise are still either unaware of it or underutilizing the available benefits to them. So our role becomes critical in this. We have to stand up and help them grow. Uh, Today, chartered accountants' role has evolved. We are no longer like only the compliance professionals. We are the advisors, the risk mitigators, and growth partners. So whether it is structuring their finances, ensuring legal compliances, guards, safeguards, guiding MSMEs through tax disclosure requirements, our involvement is direct and which impacts their sustainability. So that's the importance that sector carries and our responsibility and duty towards it. Uh, Today's Golden Charcha, it focuses on practical clarity of eligibility, registration, legal safeguard disclosures, tax implications. So with the aim that after this session, we have sufficient knowledge. Yeah, we have our all learned speakers and colleagues, but there will be some value addition and which we can directly apply in our professional practice. Uh, we have our learned speakers here, Bishnu Basia ji, who will share his insights and experience. I thank him for being part of this session, and I appreciate once again Chairman Sir and also Chimbulal ji, our coordinator, for organizing this. I encourage everyone to participate actively. If you have any questions related to our discussion, apply to them to like any real client situations. If you have, we can all discuss it and take back those insights with which can add immediate value. So with this note, I welcome you all and wish everyone a very insightful golden charcha. Thank you. थैंक यू विवेक जी फॉर योर स्पेशल एड्रेस, nicely brief the today's program. And our speaker is, I think, still not joined. Okay.
Can we connect him over phone? Someone add on to what I spoke. if इंडियन इकोनॉमी की हम लोग बात करें तो एमएसएमई जैसे हमने कहा कि स्मॉल बिजनेस नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 6 करोड़ एमएसएमईज हैं आज के दिन में। और मतलब स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज, रूरल इंडिया इसमें अपने ग्रोथ देख रहे हैं। सो I think our speaker has joined. I'll just finish up just a moment and then we can hand over to Bishnu ji. So हमने situations देखी हैं लाइक कोविड आया, जो चेंजेस अपने रिसेंटली देखे जीएसटी कंप्लायंसेस में अपने चेंजेस जो देखते हो तो उसमें MSMEs have come forward and adapted it. So our role is helping them and if they grow, we grow and our economy as a whole will grow. So that's where I end my speech and I hand over to Chimpulal ji to take forward with Vishnu ji. Welcome, Bishnu Basia ji. Thank Good you, evening and Chimpu Happy New ji. Year. Thank you. Happy New Year to all of you. Thank Uh, you. बहुत बहुत today, धन्यवाद. today's our speaker, Bishnu Basia ji, join us. His professional academic qualification is more than 25 years in practice as a chartered accountant. He is scored 16th rank holder in final examination of cost accountant, law graduate from Calcutta University, qualified DISA from ICAI, peer reviewer from ICAI, pass certification course forensic audit and fraud detection FFD from ICAI, pass certificate course MSME from ICAI. His other regular speaker on micro and small medium enterprise and entrepreneur development program, co-opted member of MSME and startup committee of EIRC ICI for the year 2025 and 26, executive member and life member of different CF association, professional social trade and commerce and sports association. He is a well-known and have a good relation with our studies circles and other chapters, and very helpful. And I request Bishnu Basia ji to continue the session. Thank you, Chimpu ji, our younger brother, for your nice introduction. Thank you, Chairman C. Vishnu Kumar Tulsian ji, for giving me opportunity to discuss very well discussed and very popular platform, Golden Charcha, EIRC, and CA Vivek Agarwal ji on the panel. Thank you, friends. At the outset, I say all of you very happy New Year 2026. And definitely we expect a lot this year. And our regulator, government also, looking forward and seeing us. And you see that how we can contribute more and more, through our different activities. We see that today, different times you already known different things on MSME. There is nothing new on this front. But you see that it is a continuous process. New thing is coming. I will tell you some new things today, very briefly. And you see that when we talk about the MSME, we should briefly discuss about its benefit. And at the same time, we have to discuss as a professional. You see that on different acts, what is the disclosure requirement, whether it is Income Tax Act or whether it is MSMED Act 2006 itself, or whether Companies Act through MCA filing. So on different aspects, will be very briefly, since our time is very limited, you know that only I will be getting 1 hour. So I have to complete by 6, and we'll take some questions also from participants. Friend,
before I start my deliberation, let me share my PPT. Is it there? Yes, it is visible. Okay. So, friend, before we go to our overall discussion, just I say briefly about the MSMED Act 2026. You know that this Act, MSMED Act 2006, came in the year 2006. And before that, this Act, there is no such categorization of enterprises into micro, small, and medium. So what was there that time before 2006? That time we had small scale industries, ancillary industries, all these things, cottage industries, village industries. So when 2006 Act came, called the Micro, Small, Medium Enterprise Development Act 2006, then we got the categorization into micro, small, medium enterprises amongst enterprises. And before 2006, when we had talked about industries, then we talked at large on industrial front, means only we talked industries, whether it is ancillary industries or small scale industries, everywhere there is concept of industries was there. But when the 2006 Act came, you see that in place of industry, the term enterprises was replaced. So right now we don't talk about industry, we talk about enterprises. So in the present scenario, we are talking enterprises, and enterprises includes industry, whether it is a manufacturing, whether it is a service sector, or lastly, it is a trading sector. Trading sector is included in the year 2021. So every sector is covered here in the concept of enterprises. So we will not talk about only industry, we will talk about enterprises. So this is the present situation. Friend, when we talk about micro, small, medium enterprises development in 2006, at the initial of the, that this act into the year 2006, there one definition. And on the basis of that definition, the enterprises, because that time enterprises came, the term enterprises were categorized as micro, small, medium enterprises. And again, that definition was revised during COVID period. That time, the trading was included. And again, that definition revised from 1st April last year, 2025, new definition came. So when you see that from the beginning of the Act, MSMED Act 2006, twice the definition have been revised. So lastly, you have got a very
very important definition where the quantum investment in plant machinery and turnover have been revised. I am showing on my PPT you see that you can see that this was very initial definition, and that definition was up to 30th June 2020, and again first revision of definition which was effective from 1st July 2020 to 31st March 2025, and latest revision this was. So this is the latest revision in definition of MSME, where and the turnover criteria is expanded for micro. You know that the 1 crore investment criteria has been 2.5 crore. Similarly, in micro stage, the annual turnover have been become 5 crore to 10 crore. Similarly, small and medium. So in medium category, it is the last category. You know that up to 500 crore turnover enterprises are coming under MSME. So it was not earlier, not there. So what is the intention of the government? Government want to more and more enterprises come under the net of MSME so that they can take advantage, different benefits they can take and grow the economy. Because the MSME's role is very important. Government thought that they should revise the definition. They have revised the definition, and up to 500 crore in investment, in turnover and investment in plant machinery up to 125 crore, they will be coming under MSME. And you know that through the designated portal, and you have to apply and get your registration done free of cost, without filing any paper, without paying any fees. You have to take your Uddam registration, which we called commonly, it is a MSME registration. So when you will having this MSME registration in your hand, so some benefit definitely you expect, and government is also giving you benefits. What benefits you will be getting? I'm very briefly. You will be getting priority sector lending benefit. You will be getting public procurement benefit. You will be getting government tender benefit through whether it is e-tender or GEM portal. Protection against delayed payment is very important benefit you will be getting, and there are a lot of schemes, government schemes there, whether it is central government or state government, and you will be getting those benefits. Similarly, you will be getting benefits of tax platform. So one by one, briefly, if I discuss, then these all benefits, you see that what is the private sector lending? When you will be designated as MSME, you are eligible to get private sector lending benefit. That means when you will get finance from banks, you will be getting sort of interest rate benefit. It may be 1.5%, 1 to 2%. Within that range, you will be getting benefit. So your interest cost will be lesser. Similarly, public procurement, you see that there is one policy is there. It is, you know, that public procurement policy. It is a central government policy. In that policy, what MSME is getting, the MSME getting, you know, that when government is procuring or PSU is going to procure goods and services, then they have to procure 25% from the MSME sector. It is clearly written in the policy. So they have to procure
25% of their annual budget. Suppose for a particular PSU, if I talk about Coal India or Steel Authority or so many public sector, what they procure annually, suppose they procure, take example, 100 crores, goods and services both, or particular goods or services for rupees 100 crores. Then they have to procure 25 crores from MSME, and rest they can procure for anybody. So this 25% reserved category, they compulsorily have to procure from MSME sector. So this policy says, and it is mandatory, they cannot divert or they cannot disobey or whatever, they cannot, no, they have to comply this mandatory provision to procure 25% of their goods and services procurement annually. Similarly, you see that when you apply in GEM portal or e-tendering, you know that so many things are coming in e-tendering and GEM portal. And there also, if you have MSME registration or Udyam registration, you can apply there and again get priority of public procurement 25% benefit. Because you know that when government procure anything, they have to procure through e-tendering or GEM portal. So that public procurement policy will apply in that e-tendering or GEM portal. You see that mostly today's scenario, GEM portal has been very important portal. Whatever GEM portal means, it is a government e-marketplace. G means government, E marketplace, M for marketplace. So whenever government is going to procure anything, goods or services, they have to procure through GEM portal. There is respective e-tendering portal also there. But nowadays, mostly you will see that government is going to procure through GEM portal. And as a MSME, they can get, means MSME supplier, they can get themselves registered over there and they can participate in tendering process and they can supply their goods or services. So this is one of the most important benefit. Similarly, friend, you know that there is, one benefit, very important benefit. It is protection against delayed payments. What is this protection against delayed payments? You see, there is one portal. It is a Samadhan portal. So through that Samadhan portal, you see that you can apply if your payment is not receiving on time, that is 45 days or 15 days, whatever it is, that criteria as per section 15 of MSME Act 2006. Yep, you can apply there and get your dues settled over there through your supplier, through your buyer. So buyer and supplier can settle their dues in the Samadhan portal. So there's a procedure is there. You see that there is specific portal and you have to apply you have to get ready your invoices, work order, everything you have to get ready and you have to apply there. At the beginning of our discussion, I told you that I will tell you one new thing. What is that new portal? You see that when you going to file a case in this portal, and this provision is clearly written in the MSME Act 2006. But government has come out one informal thing. It is one portal which is called ODR, Online Dispute Resolution. Means as per Act, okay, fine, you can file your dispute through Samadhan portal. But before Samadhan portal, the government have given one option that informally you settle your dues mutually, not going into the
case filing cases on the portal, applying in ODL portal, that will not come under the Act. Means this portal is, that it is informal. Means it is not written in the Act. But if that ODR fails, or even when the buyer and supplier both, we have to agree that okay, fine, we'll take the benefit of ODR. Then both you have to open ID through the portal and apply and get your, you can get your dues settled. But if ODR fails, you are not interested in ODR, then you have to, traditionally you have to file the case through Samadhan portal, who will, as a, that as a supplier, you can file with your invoice and your work order and all this thing, and your proceeding will be started. And there is one council, MSCFC, Micro, Small, Medium Enterprises Council is there. They will take up your case, your application, and convert your application into case, and your proceeding will be started. And as per conciliation and arbitration, your cases will be, that your cases will be proceeded, and accordingly you will get a decree at the end of the proceedings. So it is a very time-bound procedure. Within 90 days, this specifically it is written in the Act. So in the 90 days, there should be a verdict. But since that since MSCFC, the council which I am discussing, it is under state government, and there are huge cases are there, and there is limited number of officers are there. So it is not, possible to settle or proceed very quickly. And that accordingly they are proceeding with these cases one by one, but the process is slow. This is briefly about the proceedings in the Samadhan portal, and it is a great protection to MSME, because once you know that my payment is not coming within 45 days or 15 days, 45 days in case of there is agreement, and 15 days in case of there is no agreement, then you can take advantage of this Samadhan portal. So this portal protects the MSME, because normal courses you don't file cases, because when you are comfortable with your buyer, definitely you will not go cases, because that your transactions is fine, no problem. But once you see that there is problem and your cash flow is disturbed because of non-payment timely, then can you take this advantage? So this way, this Samadhan portal will protect the micro and small enterprises. So here, only micro and small enterprises can take the advantage, not medium enterprises, not the trader. So only micro and small enterprises and manufacturer and service provider will be taking advantage out of this portal. So this is the very great advantage to MSME. Next, there are so many government schemes are there. So many government schemes are there. They can take the advantage of government scheme where they can get subsidy, all these things. And one of the another very important, aspect or chapter, it is a trades platform. What is trade platform? Is it trade e-discounting system? Normally, when you supply and raise your bill, then normally to get payment against your bill, it takes time. Maybe it is delayed. And if you traditionally you go to the bank, normally in banking system, traditional banking system, you don't get your bill encashed.
they have system in traditional banking. They have system to give you finance against your bill through bill discounting, but they don't encourage those things. So there is one platform, TEDS platform, and 3 companies are there on the TED platform as per RBI regulation, RBI permission, and through that 3 companies on TED platform, they discount the the supplier's bill. So immediately, if supplier supplies the goods and services and raise bill, they can apply in TEDs. Similarly, buyer will come into TEDs, financier will come into TEDs, and there will be bidding process, factoring process, and through that bidding and factoring process, and also there is one system is reverse factoring is there. So through all this process, it is a very huge, procedure thing. So I am not discussing, just briefly I am talking about. So through this trade platform, buyers, suppliers can discount their bill, and immediately they can take finance against those raised bill. So this is briefly I am talking about the benefits what a micro, small, medium enterprises can get. But friend, when I'm talking about the benefits, you see the most benefits are given to micro and small enterprises. Medium enterprises are restricted. Traders are restricted. So please keep in your mind that once you are migrated to medium enterprises, you will be restricted to get benefits. So better to be in micro or small, because government's intention. What is government intention? Government intends to give to small businessmen, small enterprises. Micro and small enterprises are getting these all benefits. So these are some of the benefits I'm talking about. And friend, you know that I've already discussed all these things regarding benefits. Friend, one very important thing I want to discuss here. As per section 15 of the MSME Act, what it says, you know that there is one transaction between a supplier and a buyer. Buyer can be anybody, and supplier is micro and small enterprises. And it is a manufacturer or service provider. And there is one transaction, and you know that as per the MSME Act, you have to pay within 45 days. Maximum 45 days. And there is a terms and condition regarding payment. So between them, if the terms and condition of their payment terms and condition is, suppose it is 30 days, then you take it 30 days. Suppose the terms and condition of their payment is exceeding 45 days, it is 50 days or 60 days, then you have to take it 45 days. Once the payment exceeds 45 days, because you have, suppose you have 60 days terms and condition of payment, but once it is exceeding 45 days, then the interest liability you have to provide, and at the same time you have to pay that interest. Here I want to add something. Friend, you see that there a buyer and a supplier is very much comfortable with their 60 days terms and condition. And buyer and supplier says, okay, fine, I will not take any interest from your side. No problem.
हम लोग का धंधा तो ठीक चल रहा है, नहीं नहीं हम लोग कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। हम लोग जैसे 60 डेज में हम लोग पेमेंट ले रहे हैं, हम लोग ऐसे पेमेंट लेते रहेंगे। बट एज पर लॉ, आपका 60 डेज में पेमेंट आ रहा है, यू आर फाइन एंड यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम। बट एज पर लॉ, you see that when it exceeds 45 days, then you have to provide the interest. You have to pay the interest. If you don't pay the interest, you don't provide the interest, you are not complying the law. So once your your payment days exceed 45 days or 15 days, if there is no agreement, then the liability interest will automatically come. You cannot waive that interest. You cannot waive your right. Why I am talking about? I am not talking about my opinion. There is specifically Supreme Court judgment. What that judgment says very clearly, Supreme Court says, Honorable Supreme Court says that when this act, MSME Act came in the year 2006, that time this act came as a public policy. There is huge, debate and discussion in the parliament. And this act, that is a pro MSME. ये MSME का फेवर में है। तो उन्होंने उस समय डिस्कस अपने, जब बहुत डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में, तो ये देखा गया कि ये एक पॉलिसी की तरह है, ये एक इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, ये इसमें पब्लिक, ये पॉलिसी की तरह ये एक्ट को माना गया। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है, ये कोई इंडिविजुअल एक सप्लायर एंड एक बायर का मैटर नहीं है। सप्लायर मीट इज होल कम्युनिटी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एंड इस एक्ट का आप जब प्रिम्बल पढ़िएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्ट, यू विल से व्हाई डिड दैट दिस एक्ट केम टू प्रमोट द MSME, to give more advantage to the MSME. Everything is written at the beginning of the act. So ये कोई इंडिविजुअल राइट नहीं है कि चलो हम लोग का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, हम लोग इसको वेव कर देते हैं, हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। फ्रेंड, इट इज रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये जस्टिफाई किया, या आपको ये इंटरेस्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। आप अगर आपका एक्सीड 45 डेज कर रहा है या 15 दिन कर रहा है, तो भी आप इमीडिएटली उसको बुक्स में लीजिए, प्रोवाइड कीजिए, जो प्रोविजन है MSME उसके तरह आप उसको बुक कीजिए। आप अगर नहीं करते हैं तो इट विल बी रॉन्ग डिस्क्लोजर। आई विल बी कमिंग नेक्स्ट पार्ट, डिस्क्लोजर पार्ट। सो ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड ऑल यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नो दैट आपको ये इसको कैसे इसको करना है, देखना है। बट ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नाउ हम लोग अभी फेसलेस एरा भैया में जा रहे इंटरप्ट हैं। करे एक तो हाँ बोलो। क्वेश्चन इसमें ये, भैया आप बोले कि इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपने जैसे इंटरेस्ट बुक्स में प्रोवाइड करेंगे तो इनकम टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। हम्म तो अगर इनकम टैक्स की लायबिलिटी आती तो फिर अपने को इनकम टैक्स तो जब भी अपने ITR लगाएंगे तभी पेमेंट करना पड़ जाएगा। इन पार्टी तो देगा नहीं आपको इंटरेस्ट, कि वो तो पैसा ही नहीं दे रहा तो इंटरेस्ट कहाँ से देगा। नहीं, मैं तो वो बोल ही नहीं रहा कि पार्टी देगा नहीं देगा, वो तो सेपरेट वो इशू है। हाँ नहीं, मैं लेकिन बोल रहा कॉस्ट टू कि द तो मैं तो ये सिंपल बोल रहा हूँ कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट जो है उसका भी डिस्कस किया, जो MSME एक्ट में जो कहा गया है। देखिए, हम्म। मैं तो जो कहा गया वही बोल सकता हूँ ना। हाँ नहीं, और इसमें थोड़ा मेरा सा पर्सनल। नहीं, मेरा भी ओपिनियन मैं भी दे सकता हूँ, हाँ लेकिन इसमें कोई डिफरेंट ओपिनियन आ, जब सुप्रीम कोर्ट कोई चीज को बोल रहा है तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन आ सकता है? आपका ओपिनियन तो तभी आएगा, आपका पास कानून है
वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया तब आप ओपिनियन दे सकते, सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई आप ओपिनियन नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब सर सुप्रीम कोर्ट बिजनेसमैन को भी एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहा है, भाई तुम्हारा पैसा है नहीं है, तुमको इनकम भी बुक करना है और उस पर टैक्स भी देना है। देखिए, ये जो एमएसएमई एक्ट में पहले बोला, ये गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था ये एमएसएमई एक्ट लाने का? यही ना था कि आपको मान लीजिए टाइम पर पैसा नहीं मिलता है एज पर दिस एक्ट विद इन 45 डेज और 15 डेज। मैं ये कितना प्रैक्टिकल है, ये कितना प्रैक्टिकल नहीं है, मैं उस डिस्कशन में, वो डिबेट में नहीं जा रहा हूँ। तो ठीक है भैया। ये सिंपल यही थिंग है, आपको 45 डे एक्सीड करता है तो आप प्रोवाइड करना पड़ेगा। नाउ इट इज अप टू यू। एंड 15 डेज एक्सीड करता है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड पे करना पड़ेगा, आप बुक्स अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। अगर कोई क्लाइंट नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या करना नहीं, चाहिए वो फिर तो फिर भैया? रॉन्ग है, रॉन्ग है। एज ए ऑडिटर मतलब आपको भी इसको देखना है बढ़िया से। आपको नेक्स्ट मैं डिस्क्लोजर में आ रहा हूँ। तो ठीक। ये एक चीज हो गई। अभी नेक्स्ट, यू नो दैट हम ऑलरेडी डिलेड पेमेंट का डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड, हम जब डिस्क्लोजर का बात करेंगे, आप मान लीजिए अभी चिंपू लाल जी बोले कि भाई हम अगर क्लाइंट नहीं दिखाता है या उसमें डिले होता है, तो आपको देखिए डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि देयर इज, यू नो, एज पर एमएसएमई एक्ट देयर इज डिस्क्लोजर, एज पर कंपनीज एक्ट देयर इज डिस्क्लोजर, एज पर इनकम टैक्स एक्ट देयर इज डिस्क्लोजर, एंड एट द सेम टाइम आरओसी फाइलिंग जो एमएसएमई वन फॉर्म है, चार जगह आपको ये ट्रांजेक्शन्स को डिस्क्लोज करनी पड़ती है। और ये सेम चीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है, आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी पड़ती है, आपका अगर जो प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट हुआ है क्या नहीं हुआ टाइम पर वो भी डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ये तो मेन दो ही चीज तो है, वो तीसरा कुछ है ही नहीं। तो आपका एमएसएमई जो एक्ट में है, आप देखिए इसमें सेक्शन 22 एमएसएमई एक्ट, 5 पॉइंट्स आर देयर। एंड आप कोई भी पॉइंट आप देख लीजिए, यही बोला है कि अनपेड प्रिंसिपल एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो आप अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवा रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट में हो चाहे कंपनीज एक्ट में हो, दो तो ऑडिट होती है अपनी, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट में हो चाहे वो कंपनीज एक्ट में हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट। तो ये दोनों ऑडिट में आपको ये 5 पॉइंट आपको दिखाने पड़ेंगे। अगर ये 5 पॉइंट, इट इज रिलेटेड, ऑलमोस्ट रिलेटेड टू योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, टू माइक्रो स्मॉल enterprises who is under मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। सो इसमें मीडियम नहीं आएंगे और वो ट्रेडर्स नहीं आएंगे। सो आपको ये जो 5 पॉइंट्स जो हैं, आप बोले वहां यू आर कंफर्टेबल, आप नहीं दिखा रहे हैं, तो यहाँ यहाँ भी आपको नील 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 करना पड़ेगा। देर इज नो आउटस्टैंडिंग, देर इज नो एमएसएमई। ये तो दिक्कत आ रही है। और मजे की बात यह है, आप देखिएगा, अभी आप जब क्रेडिटर्स का आप आप क्लाइंट्स का ऑडिट कर रहे हैं और आप यू आर हैविंग योर क्रेडिटर्स लिस्ट, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है जहां आप कि वो क्रेडिटर्स, वो सप्लायर्स आप चेक कर पाएंगे कि वेदर दे आर कमिंग अंडर एमएसएमई, वेदर दे आर होल्डिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन और नॉट। ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्लाइंट जो बोलेगा ऑन द बेसिस, एज ए ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं, आपको क्लाइंट्स जो भी आपको देगा आपको उसके बेसिस पर यू हैव टू प्रोसीड, बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन टू, यू नो, क्रॉस चेक। गवर्नमेंट ऐसे पैन पे सर्च और अदर सर्च का ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो हाउ यू विल, यू नो, कंफर्म whether the particular a supplier who is in creditors list is MSME or not? So it is right now, it is very difficult. But if you keep your mind that these 5 points you have to check and you have to report. तो ये रिपोर्टिंग क्या हो गई? ये रिपोर्टिंग एज पर एमएसएमई एक्ट 2006 सेक्शन 22 के हो गई, whether your accounts is audited under income tax act और कंपनी एक्ट। तो ये तो स्पेसिफिकली सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए जो अकाउंट्स ऑडिट होगा उसके लिए 5 पॉइंट एप्लीकेबल है।
नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट फ्रेंड, कंपनीज एक्ट। आपको तो मालूम है कंपनीज एक्ट में क्या है ना, टैक्स पेएबल में आपको दिखाना है, ये डिस्क्लोज करना है कि आपका जो कौन एमएसएमई है, कौन अदर देन एमएसएमई है, कौन डिस्प्यूटेड एमएसएमई है। उसका अलग अलग एज वाइज, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years, मोर देन 3 years एंड टोटल आपको ये आउटस्टैंडिंग आपको अमाउंट दिखाना है। ये शेड्यूल 13 एज पर कंपनीज एक्ट। एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो हम 3CD में करते हैं, हम लोग सभी जानते हैं, ऑलरेडी ऑलरेडी नोन। स्टिल आई एम रिपीटिंग, इज क्लॉज 22 में दो चीजें, एक इंटरेस्ट एंड एक प्रिंसिपल। सो यू नो दैट इंटरेस्ट तो पहले से था, पिछले साल ये प्रिंसिपल 43BH जिसके ऊपर हम लोग बहुत चर्चा किए हैं, तो ये दोनों चीज आपको स्पेसिफिकली दिखाना है। तो ये हो गया आपका इनकम टैक्स का पार्ट, तो ये दोनों चीज दिखाना है। और तीसरा जो चीज है, यू नो दैट जो MSME फॉर्म 1 है, इसको आपको हाफ ईयरली जमा करना है। ये भी वही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड, लेकिन अभी यू नो दैट ये जो फॉर्म, जो पहले जो फॉर्म था 2019 में निकला था, रिसेंटली इट इज रिवाइज्ड एंड यू नो द लास्ट ईयर 15th, लास्ट टू लास्ट ईयर 15 जुलाई 2024 में नया फॉर्म आया। ये फॉर्म और भी डिटेल मांग रही है गवर्नमेंट, तो इसमें जो आपका पेमेंट हो गया उसका भी डिटेल्स देना है, जो आउटस्टैंडिंग उसका तो देना ही था। पहले फॉर्म में क्या था, जो आउटस्टैंडिंग था उसका ही देना पड़ता था, लेकिन इस फॉर्म में क्या है, जो पेमेंट हो चुका आपका टाइमली उसका भी वो लोग डिटेल्स मांग रहे हैं, मतलब टोटल डिटेल्स। मैंने आपको देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं आपको, अलग अलग डिफरेंट एक्ट्स में जो डिस्क्लोज करनी है, तो आपको एक, मैंने सब जगह एक ही जैसा करना है। ऐसा नहीं कि आप इसमें कुछ लिख दिए, उसमें इनकम टैक्स में 3CD में कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं। आपका देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर टाइप ऑफ डिस्क्लोजर आर देयर, तो यू हैव टू मेंटेन दैट यूनिफॉर्मिटी। तो ये जो फॉर्म है MSME, जो फॉर्म 1 है, आपको 2 बार जमा करना है साल में। एक बार जमा करना आपको फॉर द पीरियड अप्रैल टू सितंबर, जो 31 अक्टूबर तक जमा करना है। और एक फॉर्म है जो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च का पीरियड रहेगा, वो जमा करना है आपको 30 अप्रैल तक। इसमें इसमें आपको जमा करना ही पड़ेगा। यू नो दैट हम लोग अभी देख रहे हैं कि कई कई जन इसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन प्लीज कीप यू नो माइंड दैट आपका देर इज आउटस्टैंडिंग एंड आप अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये फॉर्म जमा कर देना चाहिए। आज जमा नहीं करने से आपका पेनल प्रोविजन, बहुत ह्यूज पेनल प्रोविजन है। आपको देखिए, आप जो 5 पॉइंट का डिस्कस किए, उसका ये एज पर सेक्शन 22 जो 5 पॉइंट्स MSME एक्ट में डिस्क्लोज करना है, उसका पेनल प्रोविजन है 27(2) MSME एक्ट 2006 जो है प्रोविजन कह रहा है कि आपको नॉट लेस देन 10,000 तक आपका पेनल प्रोविजन होगा फॉर रॉन्ग डिस्क्लोजर और नॉट डिस्क्लोजर एंड मोर। आप अगर ये उनका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के पास जो MSME डिपार्टमेंट है, वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकते हैं, मीन्स उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकते हैं अगर उन लोगों को ये समझ में आया नहीं, यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कंपनीज एक्ट में भी ये आप देखिए 128(6) जो बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड है, क्या आप रॉन्ग, अगर आप मान लीजिए आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो आपका तो बुक्स ऑफ अकाउंट रॉन्ग हो गया। इसमें ह्यूज पेनल्टी है, आप देखिए कितना बड़ा पेनल्टी है, विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, नॉट लेस देन 50,000। और एट द सेम टाइम आप अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट रॉन्ग हो गया तो आप 129(7) में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, उसके लिए आपका देखिए पेनल्टी है एंड 5 लाख तक और इम्प्रिजनमेंट भी है। सो ये स्ट्रिक्ट जो प्रोविजन है, ये तो है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है एज ए ऑडिटर। क्या आपको ये चेक करना है, देखना है
सिमिलरली यू नो दैट इफ 3CD में कुछ गलती होगी तो 27(1) जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें द असिस्टेंट ऑफिसर कमिश्नर अपील में डायरेक्ट पेनल्टी ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट 10,000 रुपया। एंड मोर थिंग कि आप नॉर्मली, मैंने ये तो एक पेनल्टी है ही है, बट अपने तो ऊपर इंस्टीट्यूट भी हैं, वहाँ भी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो सकता है रॉन्ग डिस्क्लोजर का। सो आवर ड्यूटी इज दैट एंडलेस। सो ये सब ऑल प्रोविजंस हम लोग को देखना है। अब जैसे मान लीजिए MSME फॉर्म 1 अगर हम लोग फाइल नहीं करते हैं तो ये कितना बड़ा 405 4 में कंपनीज एक्ट में कितना बड़ा पेनल्टी प्रोविजन है, विच में एक्सटेंड टू ₹3 लाख, और विथ बोथ यहाँ भी आप देखिए इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है। सो सीइंग ऑल दिस दैट डिस्क्लोजर एंड इट्स provision, disclosure provision, all these things we see that as a chartered accountant, as a auditor, we have to see thoroughly। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, एकदम जो है कानून में वो फॉलो करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। आप देखिए जो सेक्शन 23 ऑफ MSME एक्ट 2006 क्या बोल रहा है, जो आपका जो इंटरेस्ट है, जो डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट है, वो नॉट अलाउबल होगा। तो ये भी सॉर्ट ऑफ पेनल्टी है। आप अगर टाइम पर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं एंड देयर इज इंटरेस्ट लाइबिलिटी, तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में वो जो हम लोग ये चीज है जो हम लोग टैक्स ऑडिट में क्लॉज 22 में हम लोग दिखाते हैं। तो ये छोटा छोटा जो चीज है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कोई अगर क्वेश्चन कर सकते हैं तो करिए, कोई क्वेश्चन है तो। दिस इज फ्रॉम माय साइड टुडे। चिंपू जी, ओवर टू चिंपू जी। हाँ हाँ विष्णु भैया, देर इज नो एनी क्वेश्चन, एनी कोई क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रॉम नहीं है? पार्टिसिपेशन, हाँ, पार्टिसिपेंट से पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम पार्टिसिपेशन? हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं, चैट बॉक्स में कुछ नहीं है अभी तक। एक बार देख लो भाई चैट बॉक्स में। हम्म नहीं, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं। ये क्या हो गया, 1 मिनट। If there is any query from participants, please write on chat box or raise hand, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। हाँ मतलब किसी को क्वेरी है तो फिर आप रेज हैंड कीजिए, फिर अनम्यूट किया जाएगा। हाँ, कोई क्वेश्चन? नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट फिनिश आवर टुडे सेशन, क्लोज आवर सेशन। तो रैप अप करें। हाँ, थैंक यू विष्णु भाषिया जी। टुडेज टॉपिक पे आपने जो बताया, जो नॉलेज दिया, हमारा भी कुछ क्वेरी था, कुछ कंफ्यूजन था जो आज दूर हुआ है। और ये MSME एक्ट तो वाइटल एक्ट है छोटे व्यापारियों के लिए जिनका फंड का शॉर्टेज रहता है, ताकि उनको फंड समय से मिलते रहे। गवर्नमेंट की मोटिव तो ही है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है जो इस एक्ट में अभी भी क्लेरिफाइड नहीं किया गया है। अब इंटरेस्ट बुक करना एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्लाइंट चाहेगा कि इंटरेस्ट बुक करते टैक्स देना पड़े, और आज वो बुक करता, कस्टमर से पैसा नहीं आएगा तो फिर उसको टैक्स भी लग गया और पैसा भी नहीं आएगा, वो डबल मार खा जाएगा। हम्म। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जिसका आने वाले दिनों में हो सकता है कोई रास्ता निकले, कोई सोल्यूशन निकले। हम्म। एंड थैंक यू, एंड वी क्लोज आवर सेशन टुडे। थैंक यू विष्णु जी। थैंक यू चिंपू जी। थैंक यू।
विष्णु भैया कुछ बोलना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। विष्णु जी से बात ही नहीं हुई। अब चेयरमैन साहब, हाँ चेयरमैन साहब सर, नमस्ते सर। आप बिजी हमारे हैं क्या बड़े आप? भाई हैं, इतने अच्छे स्पीकर हैं सर। चलो, इट नाइस नमस्ते डिलीब्रेशन नमस्ते एंड नमस्ते। थैंक यू। आप मेरे को थैंक्स आज फॉर गो अहेड, प्लीज गो अहेड। आई एम सेइंग दैट we always get your support whenever we require. So this is a blessing on me that whenever I call you, you are always available to us. So this is good for us, good for ERC, and hope the participants always get some insights from you. This is very good opportunity for us, and I can say that Vivek has also done a very good. In fact, in absence of you, I found that Vivek can be the another speaker on the MSME. He was saying so well. So thank you for coming, sir. अच्छा, Thank वेरी you, गुड। sir. थैंक यू थैंक यू। Yeah. अच्छा, पार्टिसिपेंट्स हो गए, 15 आदमी ज्वाइन कर लिए। 18-20 तक चले गए थे। अच्छा। सर ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि अपने लोगों को सपोर्ट करना है आने के लिए, क्योंकि सब लोग फिजिकली आ नहीं पाते हैं और सबको हाँ, सपोर्ट नहीं कर पाते। 300 आदमी का टारगेट है कि हम 300 चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूरी तरह से हम फोर्टिफाई करेंगे इस गोल्डन चर्चा के थ्रू, हाँ। जिसमें कि हमारा 60-70% हो गया है अचीवमेंट। हम्म बाकी में हम लोग अचीव कर लेंगे इसको, सो दैट वी कैन क्रिएट गुड पीपल इन द ईस्टर्न इंडिया, है ना। और सर मैंने, आपको अच्छा, आपका तो ये जो चर्चा जो है, ये गोल्डन चर्चा, सर, ये तो मैंने बहुत फेमस हो गया। हाँ, ये हाँ रियली गोल्डन चर्चा हो रहा है। हाँ, ये सर ऑब्जेक्टिव अच्छा है एंड ना तो एंड हम लोग का जो गोल्डन पीरियड है, हम लोग फिर से हम लोग को मिलने जा रहा है। पर्टिकुलरली हम बंगाल का पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, हाँ हाँ, एग्रीड एग्री, मैं समझ क्योंकि गया। हाँ हाँ, हम लोग मैं समझ का अब आप बंगला में, आपको यू नो दैट कि ये हम लोग तो इधर ही पैदा और इधर ही सब कुछ पढ़ाई लिखाई हुआ है, तो हम लोग तो वो हम लोग बोलते ही हैं सोनार बांग्ला। हाँ, सोनार बांग्ला, राइट। अच्छा तो है। आप रियली सुनो, इसको फिर सोनार बांग्ला आप वापस ला रहे हैं, ये बड़ा बड़ा अच्छा बात है। है, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है बंगाल में, अच्छी बात है। हाँ हाँ। एंड अच्छा है कि आप लोग भी आ गए। अब ये माँ तुझे सलाम में थोड़ा सा आप लोग को लग करके इस प्रोजेक्ट को भी काफी अच्छा करना है कि भाई कंट्रीब्यूट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट टू द नेशन बिल्डिंग। और हम लोग क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, जो भी परफॉर्मिंग है सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो सीए की जो दूसरी क्वालिटी हमें दिखाई देगी इसमें कि दे कैन ऑल्सो सिंग अ सॉन्ग, दे कैन ऑल्सो डांस, दे कैन ऑल्सो वाह, परफॉर्म। वेरी गुड वेरी गुड द बेस्ट वेरी पार्ट गुड। विच यू डोंट नो डजंट नो, क्योंकि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचता है कि हम बाथरूम सिंगर अच्छे हैं। तो बाथरूम सिंगर अच्छी बात है, लेकिन स्टेज पे परफॉर्म करना अलग बात है। हाँ हाँ। ये भी उनकी क्वालिटी को और आगे बढ़ाएगा, तो आपको ना देख के ना बहुत ना। अच्छा लगेगा। और एनर्जी कमांडो को बुला रहे हैं फ्रॉम द दिल्ली, और दूसरे भी अच्छा। कमांडो लोग को बुला रहे हैं, तो एनर्जी ड्रिल भी होगा वहां पे। तो हाँ इस तरह हाँ के काफी कुछ नए प्रोग्राम, प्लस जो फ्रीडम फाइटर को भी हम लोग बुला रहे हैं, हाँ हाँ दैट हाँ। विल हेल्प अस। तो प्लीज ज्वाइन अस विदाउट फेल। ना ना, एकदम एकदम ज्वाइन कर लेंगे। और आपका तो हमेशा इनोवेटिव आइडिया रहता ही है सर ना। सब आप लोग का आशीर्वाद है सर। और अच्छा सर अच्छा चीज आप करते मैं रहते हैं। इन पर्सन बोला, वो विष्णुपुर वाला जो स्टडीज चैप्टर्स आपने सर उसको पढ़ाए करेंगे हैं, उसको करेंगे उसको। एक्चुअली वहाँ का जो एक जन है, तो वो थोड़ा सा बिजी था अभी 31 तारीख तक। देखिए तो सर 9-10 महीना बीत गया फॉलो करते करते, नहीं पर नहीं, पता नहीं वो है। सॉरी, वो हम करेंगे उसको। करवाइए आप करवाइए सर, मेरा अच्छा लगा, कमिटमेंट आपको दिए हैं, तो उसका हम फुलफिल करेंगे करवाएंगे। ही। गुड गुड गुड, वेरी नाइस। चिंपू जी, वोट हाँ, ऑफ थैंक दीजिए। हमको हमको कलकत्ता में रहना है कि नहीं रहना अरे सर सर, आप हमारे बड़े भाई हैं है? सर। चिंपू जी, वोट ऑफ थैंक थैंक यू। दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, Thank you for today's session and participation hearing. And विष्णु बासिया जी ने एमएसएमई में जो कहा, जो प्रैक्टिकली काफी जगह पे प्रॉब्लम भी है और काफी जगह सॉल्यूशन भी आ रहे हैं। एंड विवेक जी ऑल्सो, थैंक यू फॉर टुडेज स्पेशल एड्रेस एंड थैंक यू पार्टिसिपेशन फॉर पेशेंस शेयरिंग। थैंक यू। थैंक यू। Thank शुड you. आई लीव? लीव लीव। ओके, थैंक यू।